Hello everyone, welcome to CNA Daily Newspaper Analysis. Today we are back with some of the 5 to 6 articles that are discussed and which are presently in news, taking some news out from the 3 newspapers that we daily and regularly follows. Okay, so let's start with as of today. See, the first very topic that is in news is the climate pledge, or that is can be said as something which is associated with the climate change. Okay, and this is very much useful for you in the GS3 paper under the heading of the environment and ecology. See, the news is that the cabinet net for climate pledges. Okay, there's a cabinet net for climate pledges. We can see that the last November, the government recently highlighted the various stand that government took in the COP, that is the Conference of Parties 26. Okay, now you can say that the 26th session of the Conference of Parties that was held recently in Glasgow, United Kingdom, where our particular Prime Minister went on for various number of pledges, and which can be told as the Panch Amrit, or you can say about the 5 nectar elements. Okay, 5 nectar elements. ये बताया गया था वहां पे हमारे पीएम के द्वारा. Okay, and India has presented the following 5 nectar elements of India's climate actions. And what are they? They are, number 1, you can see, I will write it over here. Number one is that India committed to reach 500 gigawatt non-fossil fuel energy capacity by 2030. ये पहला था. दूसरा क्या था? 50% of its energy requirements will come from renewable sources of energy by 2030. ये दूसरा था. तीसरा क्या था? तीसरा था reduction of total projected carbon emission. Okay, reduction of total projected carbon emission by 2030. Okay, number 4, a reduction of the carbon intensity of the economy by 45%. Okay, so ये वाला है. Then lastly, achieving the target of net zero emission by 2070. So you can see that all these particular 5 pledges that India did in the Glasgow summit of COP, we can say that these are the Pancha Amrit, or the 5 nectar elements of India's predictions or India's aspirations towards the very end of the respective years that India is pledged for. But what is happening as of now? India is very much concentrated towards only some 2 of the respective elements. अभी हम लोग ने 5 pledge करके आए थे, लेकिन India is now much more focused only on the 2 elements. ये 2 element कौन सा है? ये 2 element है India is directly planning, that is the second or the third one. That is, India is planning to reduce the energy requirements to 50%, that is directly coming in from renewable sources, and obviously reduction of the total projected carbon emission by 1 billion by the time of 2030. So India is directly committed with all this respective perspective today. Okay, so ये एक news in transition है, which in the later times you could find many more elements with respective to the climate changes. Okay, so यहाँ पे we have to deal with such number of categories with such number of aims where the India is very much well performing, so that क्योंकि हम लोग pledge करके चुके थे even in the conference of parties which has held in Paris. Okay, तो वहां पे भी हम लोग ने pledge किए हुए थे कि like we will reduce the carbon emissions and we will control the respective Earth's atmosphere, और जो heating होता है Earth का वो हम लोग by 1.5 to 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखेंगे. एंड इसके लिए पूरे कंट्रीज को इकट्ठा आना पड़ेगा. Okay, and with that particular perspective, we even went on for the International Solar Alliance in a company with France, headquartered in Haryana, India. तो हम लोग उसमें भी गए हैं. तो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोग बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं. Today, when we are directly mixing the ethanol with petrol, ethanol with diesel, that means what? धीरे धीरे करके हम लोग इस चीज को एक हाइब्रिड व्हीकल्स के रूप देंगे, so that after some 20-30 years, even slowly and slowly, the people or the great sum of people who are using
such number of fossil fuels, they can also reduce their intake of the petrol as well as diesel. तो हम लोग धीरे धीरे करके हाइब्रिड व्हीकल्स की तरफ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हम लोग जा रहे हैं, बिकॉज वी हैव गॉट सम ऑफ द कमिटमेंट टुवर्ड्स द क्लाइमेट, टुवर्ड्स द एनवायरमेंट ऑल्सो. तो इसी पर्टिकुलर चीज के लिए ये एक टोटल न्यूज था. ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द फ्रीबीज GS2 पेपर. ओके, इट डायरेक्टली कम्स ऑन द गवर्नेंस. ओके, तो यहाँ पे क्या है, SC कॉल्स फॉर अ पैनल टू लुक इनटू द फ्रीबीज इशू. ओके, फ्रीबीज क्या होता है? फ्रीबीज होता है जो जैसे गवर्नमेंट जो कमिटमेंट्स करते हैं, ओके, कि हम लोग ये आपको मुफ्त में देंगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त में देंगे, ओके, आपको इलाज, आपका इलाज मुफ्त में होगा, ठीक है, आपका ऋण माफ हो जाएगा, टैक्सेस जो होता है, जो इंस्टॉलमेंट्स होता है, EMI होता है, वो माफ हो जाएगा. तो ऑल दिस थिंग्स आर डायरेक्टली नोन एज अ फ्रीबीज. ओके, when I say or when I directly define the freebies, okay, ये देखो कि like the political parties often promise to offer this free electricity or water supply or monthly allowance to some of the unemployed, daily wage workers, and even some of the destitute women's. Okay, and even in some point of time they even distribute the gadgets such as laptops, smartphones in order to secure the vote of the people. Okay, and every particular state in India have become habituated in giving freebies, be it in the form of loan or be it in the form of waivers such as free electricity, cycles, laptop, TV sets, and etc. Okay, these respective freebies and the kinds of expenditure that are done under these populist pressures is a questionable issue as of today. क्यों? Because ये जो जहां से ये सब आते हैं, ये सब जहां से freebies मिलते हैं लोगों को, then obviously it's respectively the taxpayer money. And given the last 30 years, you can see that there has been a rising inequality. Some kind of relief population in the form of subsidies is not at all justified. कोई लोग काम कर रहे हैं, कोई लोग मुफ्त में खाना खा रहे. So this is directly rising, this is directly gaining some form of inequality in our country. ओके, तो अगर मैं इस चीज का आर्गुमेंट्स में चला जाऊं, ओके, आज मैं इसका एक प्राइम एग्जांपल किसको मानता हूं? श्रीलंका. The recent news on the collapse of Sri Lankan economy has endangered a fresh debate on the state's role in acting in this respective freebies. श्रीलंका के गवर्नमेंट ने क्या किया था? The government of Sri Lanka cut the taxes across the board and provided several free goods and services. And consequently, because of these freebies, the economy collapsed and the heavily indebted country was left with no choice but to default on its commitments. तो ये हाल हुआ. अगर हम लोग ज्यादा फ्रीबीज देंगे तो हमारा हालत भी श्रीलंका की तरह हो सकता है इन द कमिंग टाइम्स. ओके, सिंस द फ्रीबीज आर एन इंटीग्रल पार्ट, हम लोग पॉलिटिकल रैलीज पे देखते हैं ऑल टाइप्स ऑफ फ्रीबीज. हम लोग आएंगे तो ये मुफ्त करा देंगे, हम लोग आएंगे तो इतना पैसा देंगे. तो all these particular freebies directly makes a country's economy very much of impactable. Okay, तो अगर मैं देखूं कि this particular freebies आज पूरा स्टेट्स में फैला हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट इसीलिए इंटरफेयर करके, ओके, सुप्रीम कोर्ट विथ सम फॉर्म ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, ये क्या कर रहे हैं? दे आर डायरेक्टली मेकिंग द गवर्नमेंट अंडरस्टैंड अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ दिस फ्रीबीज. ओके, just to make some of the vote gain, just to gain some of the voters' confidence, this particular freebies are not at all healthy for a democracy, for an economically stable country like India. So hence, we can see that this freebies should be limited. And obviously, the country of India or the government should realize the economic impacts of freebies. It is not how cheap the freebies are, but how expensive they are for the economy. That the particular phrase or that the particular word or that the particular line that the government should understand. So we must strive instead for a race to efficiency through a respective federalism. The federalism that we have and the problems of this federalism, we must have to build on together. Hence, the judicious demands of freebies are necessary, but it is not something that unjudiciously every type of freebie should be referred or should be given to the respective state. And there should be a very well-cut difference between a subsidy and freebies.
सब्सिडी में क्या होता है, जनरली हम लोग एलपीजी का कुछ लेते हैं, आज जैसे मान लो एलपीजी हम लोग 1000 रुपए में खरीदते हैं, 1100 रुपए में खरीदते हैं. ओके, सो इन दिस वेरी 1100,000 rupees, हार्डली सम 50 to 100 rupees आर गिवन एज अ सब्सिडी. तो सब्सिडी भी डिपेंड करते हैं. सब्सिडी में हम लोग कम से कम 80-90% ऑफ द वेरी मनी हैज बीन पेड बाय द वेरी रेस्पेक्टिव इंडिविजुअल. लेकिन सब्सिडी में क्या होता है, कुछ एक 10% 5% का चार्ज तुम्हें वापस मिलता है. सो इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम फ्रीबीज. फ्रीबीज में क्या होता है, 100 to 100% इज बीन टोटली बीन एराडिकेटेड. टोटली माफ किया जाता है कि तुम एक लोन ले रहे हो, अगर मान लो तुम डिफॉल्ट हो गए हो, अगर सरकार ने फ्रीबीज अनाउंस कर दिया, तुम्हें एक पैसा भी वहां पे देना नहीं पड़ता है. वो पैसा कौन देगा, सरकार देगी. So therefore, there should be a clear-cut difference between subsidies as well as freebies. And there is a need to understand the impacts of these freebies. And this is very important for an economically stable country like India. Because without such number of like differences between subsidies and freebies, the country becomes more and more stable and ultimately leads to collapse, just like what we can see in Sri Lanka. तो ये एक पर्टिकुलर इशू था with respective to the states, and SC directly calls upon the government, be it the central government, be it the state government, to look upon the freebies issue. Because अगर हमारा एक नेबरिंग कंट्री ऐसा हाल में जा सकता है, तो कल परसों हमारा भी वही हाल हो सकता है अगर तुम फ्रीबीज ज्यादा से ज्यादा देने लगो. तो दैट इज समथिंग एसोसिएटेड विद दिस रेस्पेक्टिव न्यूज. तो आते हैं नेक्स्ट पे. ओके, digital generation of DIN. Okay, digital generation of the respective thing which is known as DIN. So when I say about DIN, that is directly meaning document identification number. So what is this document identification number? It is a new system of identification that income tax departments has introduced for the respective taxpayers. Okay, ये generally GST collection में हम लोग का बहुत मदद करता है. And what is this? It is a 8-digit identification number. जैसे हम लोग ने कल आधार पे पढ़े थे about 12-digit number. तो ये 8-digit identification number है, and इसका validity lifetime है. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि the SC has directed the Center and the GST Council to issue an advisory to the state regarding implementation of the system of electronic registration of DIT. तो ये जो DIT होते हैं, तो इस DIT के थ्रू से every communication to be issued by the income tax department will now have this particular number, which ensures proper audit trail of such communication. अगर मैं कहीं पर पैसा जमा करने जा रहा हूं, तो through this particular number I would have an individual identity to directly get back to the respective amount of returns that I am directly paying it to the respective board. Okay, and this particular DIN has been issued by the CBDT. Okay, that is the Central Board of Direct Taxes. और ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस होता क्या है? द सीबीडीटी इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी दैट फंक्शंस अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट. और ये एक्ट कब पब्लिश किया गया था? 1963. एंड ये जो बोर्ड है सीबीडीटी, इट डायरेक्टली कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, व्हिच इज डायरेक्टली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो सीबीडीटी का काम क्या होता है? सीबीडीटी का काम होता है प्रोवाइडिंग इम्पेटस फॉर अ पॉलिसी एंड प्लानिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस का बात नहीं बोल रहा हूँ. तो यहाँ पे आई एम डायरेक्टली सेइंग अबाउट द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली वेंट ऑन फॉर दिस पर्टिकुलर DIN number so that it can administer the direct tax laws to various number of departments that income tax has all over the respective country. तो ये एक यूनिक नंबर है, जस्ट लाइक वी हैव गॉट आधार नंबर. जैसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है हम लोग का आधार का, तो वो 12 डिजिट का होता है. सिमिलरली ये टैक्स पेयर के लिए इजी प्रोसेस होता है, व्हिच इज एन 8 डिजिट नंबर डायरेक्टली गोइंग ऑन फॉर द टैक्स पेयर्स हु आर डायरेक्टली पेइंग द रेस्पेक्टिव टैक्सेस टू द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स. तो ये होता है DIN. तो ये छोटा सा एक पर्टिकुलर टॉपिक है. देन कमिंग टू द मेजर इशू टुडे, दैट इज द ताइवान, USA एंड चाइना. Okay, see, recently there is a particular news of US parliamentarian, okay, Nancy Pelosi visiting Taiwan. Okay, Taiwan का एक respective clash है with the country of China. See, China-Taiwan relationship has been strained for very good number of years. Okay, this China and Taiwan separated amid
the civil war that occurred in 1949. And China considered Taiwan a part of its territory. Okay. But Taiwan leaders at that point of time say that Taiwan is a sovereign state. So after decades of hostile intentions, angry rhetorics, okay, relations between China and Taiwan started improving during the time of the late 1980s. And China at that point of time put forwarded a system which is known as one country, two systems. ये system लाया था. One country, two systems. ये systems लेके आया था. And it started improving the relations between the China and Taiwan, and under which Taiwan would be given significant autonomy, but it should be considered amongst the Chinese territory. In later period of times, we can see that China's expansionist policy and forced implementation of its particular ideas, of its particular beliefs, of its particular professions, when it got implemented in this Taiwanese province, people revolted. Because we know that the ROC, that is the Taiwan's Republic of China, this area is purely fed up with the democratic system, is fed with the democratic system. मतलब यहाँ पे democracy है, लेकिन चाइना में हम लोग को democracy नहीं मिलेगा. So China is not a democratic country as compared to Taiwan. Taiwan is a democratic country or is a democratic entity. So therefore, Chinese implementation of any other perspective is not being welcomed in Taiwanese province. Okay? और चाइना ने बहुत सारे कंट्रीज के पास जाके बोला कि लाइक दो वी आर गोइंग विथ वन कंट्री टू सिस्टम्स बट वी वांट एवरी अदर कंट्री टू गो फॉर वन चाइना पॉलिसी. लेकिन बहुत सारे कंट्रीज ऐसे निकल के आ गए, बी लाइक यूएसए, बी लाइक ऑस्ट्रेलिया, बी लाइक जापान, हु नेवर एक्सेप्टेड चाइनीज वन चाइना पॉलिसी. इंडिया आउटराइटली एक्सेप्टेड इंडियाज वन चाइना पॉलिसी राइट इन 1949, क्योंकि उस टाइम इंडिया और चाइना का रिलेशंस बहुत सही था. उस टाइम एक बहुत नारा चलता था, हिंदी चीनी भाई भाई. तो बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज वी कैन सी दैट वी नेवर एक्सेप्टेड Taiwan to be an independent entity. Okay, so therefore we can see that since 1949 India accepted the one China policy and accepts Taiwan and even Tibet as a part of China. However, this particular issue, okay, this particular issue was being challenged regularly by each and every politicians or each and every particular diplomats that is presently making India's foreign policy. कि इंडिया को ये जो फॉरेन पॉलिसी है अबाउट वन चाइना पॉलिसी, इसको चेंज करना चाहिए. इट्स द हाई टाइम नाउ. ओके, because of this one China policy, India and Taiwan do not have any type of formal diplomatic relations. We have only maintained some of the representative offices in each other's respective capitals, but we do not have got embassies. So therefore, as of now, when every other country is directly challenging Chinese hegemony even in South China Sea, because अगर तुम लोग, मैं यहाँ पे एक बात बोलूं about China's final warning, नैन्सी पेलोसी जब वहां पे पहुंचे भी नहीं थे, उससे पहले चाइना ने वार्न कर दिया था कि दिस इज चाइना's फाइनल वार्निंग. अगर नैन्सी पेलोसी का प्लेन अगर ताइवान में लैंड हो गया तो इट विल बी डायरेक्टली बीन रॉकेटेड. हम लोग के यहां से रॉकेट जाएंगे, उसको तबाह कर देंगे, मिसाइल फेंक देंगे, तबाह कर देंगे. सो ये लेकिन हुआ नहीं है. नैन्सी पेलोसी वहां गई, लोगों से मिले, गवर्नमेंट से मिले, लेकिन वहां पे कुछ हुआ नहीं. एक विकिपीडिया में पेज है चाइनीज फाइनल वार्निंग, पढ़ लेना. तो वो पहले भी वैसे 1970s 1960s के टाइम में भी वही होता है. जैसे हम लोग बोलते हैं अरे मैं तुम्हें मारूंगा मारूंगा मारूंगा, लेकिन हम लोग मारते नहीं है. ओके, हम लोग रुकते हैं, तू मारना पहले, तू मारना पहले, हम लोग वैसे करते रहते हैं. तो दिस इज चाइनीज फाइनल वार्निंग. तो इसीलिए अभी भी यूएसए आजमा रहे हैं कि चाइना उसी स्टैंड में है या आज कुछ साहस करता है मारने के लिए पहले. लेकिन व्हाट वी हैव सीन दैट चाइना इज स्टिल ऑन द रेस्पेक्टिव हिस्ट्री में जैसे वो लोग थे, अभी भी चाइना वैसे ही है. They never go for war. So therefore you can see that in this respective arena, यहाँ पे जो लोकेशंस होते हैं, ये सब लोकेशंस मैंने मैप में यहाँ पे दिखाया है. लुक फॉरवर्ड अबाउट द साउथ चाइना सी, कहां तक एक्सटेंड होता है ताइवान का एग्जैक्ट लोकेशन देख लेना.
ओके, यहाँ पे जो जापान का आइलैंड्स है, साउथ कोरिया का आइलैंड्स है, फिलीपाइंस का आइलैंड्स है, थोड़ा बहुत देख लेना। ओके, सम ऑफ द मेजर पोर्ट्स इन द चाइनीज ईस्टर्न साइड, यहाँ पे जो मेजर पोर्ट्स है वो सब थोड़ा देख लेना। Because only the issue is not important. Geographically, also this region becomes important just because of the present news that is going on in this respective area. तो ये एक पर्टिकुलर छोटा सा इश्यू है। ओके, फिलहाल देखते हैं क्या होता है। ओके, इंडिया का स्टैंड अभी भी यहाँ पे कुछ नहीं है। इंडिया इज डायरेक्टली इवन नॉट कमेंटिंग, इवन नॉट सपोर्टिंग एनी अदर रेस्पेक्टिव, बिकॉज इंडिया, though being a member of the Quad, is not showing any type of energetic engagements in this respective area. Okay, because हम लोग चाइना को अभी टैकल नहीं कर सकते। Okay, though we are very much prepared for a two-fledged war. If it goes to war, India will directly face a two-fledged war, one from Pakistan, one from China. तो हम लोग वैसे कर रहे हैं जैसे कल परसों अगर चाइना के साथ हम लोग का कुछ अटैक भी हो जाए तो चाइना ऑल्सो फेसेस टू फ्रंट वॉर, एक इंडिया की तरफ से, एक ताइवान या जापान की तरफ से। तो हम लोग भी वही कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो इसीलिए वी आर सीइंग दैट दिस आर द मेन activities that is today going over there in this respective area of the Chinese province or near to the side of Taiwan. ओके, तो ये एक रेस्पेक्टिव इशू था, दिस इज द मेन इशू, और यहाँ पे जो ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स है वो अच्छे से तुम लोग देख लेना। ओके, नेक्स्ट, इंडिया सेट्स फॉर अग्निपथ, वरी इन नेपाल ओवर गोरखा रिक्रूट्स। ओके, ये देखो, अभी अग्निपथ लेके हम लोग का यहाँ पे बहुत ज्यादा कांड हो गया था बीच में। ठीक है, ट्रेन में जला दिया था, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज ये कर दिए थे, प्राइवेट व्हीकल्स नष्ट कर दिए थे। ठीक है, तो ये सब बहुत चला रहा था क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी और एक स्कीम फॉर रिक्रूटिंग द सोल्जर्स अक्रॉस द थ्री सर्विसेज शुरू, मतलब आवेदन किया था। अभी तक उसका एग्जामिनेशन या कुछ नहीं हुआ है, फिलहाल अगस्त के लास्ट में होने का एक पर्टिकुलर तादाद पे है। तो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में जितने भी लोग जाएंगे, obviously not the officers, it is particularly the lower rank soldiers who are getting recruited in sipahi, who are getting recruited through the constables area, तो वहां से आगे जाएंगे। ठीक है, तो it allows the patriotic and motivated youth to serve in the armed forces for a period of 4 years। तो लोगों को इस 4 years से ही प्रॉब्लम है, क्योंकि अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम, ओके, द यूथ ज्वाइनिंग द आर्मी हु आर कॉल्ड एज अग्निवीर, ओके, ये लोग 4 साल लेके काम छोड़ के चले जाएंगे। तो उसके बाद ये लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पे उसका परमानेंट जो इन लोग का एक नौकरी होता है, ये लोग इतना मेहनत करेंगे, इतना ये लोग ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद इन लोग को छोड़ा जाएगा। सो दो यहाँ पे बोला गया है गवर्नमेंट के थ्रू से कि हाउएवर आफ्टर दिस पर्टिकुलर 4 years ओनली 25% ऑफ द बैच विल बी रिक्रूटेड बैक इनटू देयर रेस्पेक्टिव सर्विसेज फॉर एन अनदर पीरियड ऑफ 15 years। लेकिन जो बाकी का 70-75% लोग हैं, ओके, तो वो लोग क्या करेंगे? सो ये डायरेक्टली वी कैन सी इट्स अ पर्टिकुलर जो यहाँ पे इश्यूज चल रहा है कि द वेरी ट्रेनिंग जो ये लोग करते हैं इट मे रिमेन अनयूटिलाइज्ड, क्योंकि फोर्सेस विल लूज सम ऑफ द एक्सपीरियंस सोल्जर्स। और हर साल में, हर चौथे साल में ऑब्वियसली इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर इवन द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट टू मेक अ रेस्पेक्टिव एक्सपेंस फ्रॉम द वेरी फ्रेश। तो ये सब थोड़ा आर्गुमेंट्स था, इसी के लिए ये एक वरी बन गया है कहां पे? नेपाल में। बिकॉज इफ आई से अबाउट द नेपालीज और द रेस्पेक्टिव गोरखास, ओके, गोरखास आर नॉट सर्विंग फ्रॉम लाइक कि चलो हम लोग इंडिपेंडेंस के बाद से गोरखास हम लोग के आर्मी में है। नो, इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट। Impressed by their discipline and ferocity in the Anglo-Nepalese War of 1814-1816, the British at that point of time decided to recruit the Gurkha soldiers. And since then, Gurkha soldiers have fought on the side of the British Empire in almost every war, including both the world wars. So, इसीलिए in 1947, when India got independence, with a tripartite agreement, the British Army amalgamated the Gurkha regiment into combined Royal Gurkha Rifles. और ये तीनों जगह काम करते हैं, इंडिया में भी करते हैं, नेपाल में भी करते हैं और यूनाइटेड किंगडम में भी करते हैं आज। तो वी नो टुडे दैट इन द वेरी ब्रिटिश आर्मी वी कैन सी 3% ऑफ गोरखास, 3% of the Gurkhas are therefore in the British Army. Even at that point of time, Queen Elizabeth II of Britain is guarded by two Gurkha rifle officers. तो देख सकते हो तुम लोग, ओके, कि how much bravery they have got, how much fiercely they can directly fight a respective war. ओके, और यहाँ पे एक और चीज बोल देता हूँ, जो गुरखास का बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नेचर वेपन होता है वो होता है क्या? खुखरी। सिग्नेचर वेपन है इसका। ठीक है,
So therefore, we can see that today in India, we have got roughly around 32,000 Gorkhas, who makes up around 40 battalions serving in the 7 regiments in the Indian Army. 7 regiments में है, और वो भी 40 battalions. Hence, we can find, and there is not a single military campaign launched by independent India where the battalions have not left their indelible mark. अगर हम लोग डायरेक्टली देखें गोरखा रेजिमेंट पे, ओके, तो कितने सोल्जर्स हम लोग का शहीद हुआ था इन द रिसेंटली कंडक्टेड कारगिल वॉर. Okay, we can see about Lieutenant Manoj Pandey. He was a Gurkha soldier. Okay, he was leading the battalion of the Gurkha soldiers. Okay, so you can see how the Gurkha regiment directly fought this particular Kargil battle. Okay, so they are very much brief. And यहाँ पे अभी because of this Agnipan scheme उन लोग के साइड में थोड़ा worry हो गया है कि ये इतने like hue and cry हो रहा है because of this scheme. ठीक है, तो therefore you can see that there is a particular confusion among the masses of the Gorkhas that how the new recruits will be directly been added to the Indian Army. तो ये एक particular news in transition है. ओके, अभी जब हम लोग का अगस्त महीने के लास्ट में ये सब रिक्रूटमेंट शुरू होगा, क्योंकि अभी हम लोग सुने हैं कि 50,000, 30,000, 50,000 आर्मी में, 30,000 एयरफोर्स में, ओके, 25-20,000 नेवी में, ऐसे कुछ रिक्रूटमेंट्स का एप्लीकेशंस आए हैं. ठीक है, तो अभी ये हम लोग को देखना जाएगा कि अगस्त लास्ट में क्या होता है, कैसे रिक्रूटमेंट होता है, लोगों कैसे लेते हैं. उसके बाद ये हम लोग डिस्कस कर पाएंगे कि व्हाट आर द फेट ऑफ द गोरखास एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो ये डायरेक्टली इस न्यूज इन ट्रांजिशन है, लेकिन हम लोग को थोड़ा बहुत गोरखास के बारे में पता होना चाहिए. एंड when about the three-party agreement that India, Britain and Nepalese Gurkhas that directly went on in 1947, वो थोड़ा हम लोग को एक बार एक brief sketch में जानना चाहिए. Okay, moving on to the next one, that is reaping the demographic dividend. Okay, अगर मैं demographic dividend का बात बोलूं, okay, about the population pool. Okay, so यहाँ पे देखो कि like when I say about demographic dividend क्या होता है? Today India has got roughly a good number of demographic dividend. मतलब यहाँ पे जो young population है, जो working age group का population है, okay, that we considered around 15 to around 55 years of age मान लो. Okay, ये एक age group है जो कि हम लोग बोलते हैं कि they are very much independent in nature. Below 15 population, they are very much of dependent population, or above 55 or 60 years of age, we can see that they are also very dependent population. ओके, हम लोग छोटे लोग को भी देखभाल करना पड़ता है, हम लोग को जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उन लोग को भी हम लोग को थोड़ा देखभाल करना पड़ता है. तो द वेरी एज ग्रुप ऑफ दिस पर्टिकुलर एज इज अ वेरी वर्किंग एज ग्रुप और अ वेरी यंग एज ग्रुप. इन लोग हम लोग को देखना नहीं पड़ता है, दे आर नॉट डिपेंडेंट, दे आर टोटली इंडिपेंडेंट इन नेचर. ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वी कैन सी दैट इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ हैज ऑब्वियसली राइज्ड. ओके, 2023 में रिसेंट न्यूज के तहत 2023 में हम लोग का क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा एंड वी विल बाईपास चाइना इवन. तो इन दिस पीरियड ऑफ टाइम ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये हम लोग का लास्ट करेगा मान लो और 30 साल, 250 तक हम लोग का ये डेमोग्राफिक डिविडेंड थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा. मतलब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी विल हैव अ ओल्डर पॉपुलेशन. आज जैसे हम लोग चाइना को देखते हैं, जापान को देखते हैं, तो दे हैव गॉट एन ओल्डर पॉपुलेशन एज कंपेयर टू इंडिया. तो अभी विद इन दिस 30 इयर्स अगर हम लोग ने इस पर्टिकुलर डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छे से यूज ना किए, then obviously it will be a detrimental to the India's growth as well as economy in the coming times. Okay, so therefore this demographic dividend in a country which has got a huge young population, so इस young population को we have to make them skilled, employable, who can directly contribute to the country's economy. Okay, so therefore even in this today's time we can see that our particular total fertility rate, in simple terms, if I refer to the total number of children born, likely to be born from a woman in her lifetime, तो वो क्या है, वो अभी है 2.1. So this is the total fertility rate of children per woman which is called replacement level fertility. तो ये आज हम लोग का बहुत ज्यादा है 2.1. चाइना का ये 1 से भी कम हो गया है because of Chinese one child policy. वन चाइल्ड पॉलिसी के लिए आज चाइनीज का पॉपुलेशन डाउन हो रहा है एंड देयरफॉर चाइनीज पॉपुलेशन इज टोटली एजिंग. और जो छोटे छोटे लोग होते हैं वो दिस इज डायरेक्टली अ डिपेंडेंट पॉपुलेशन, 0 to 15 इयर्स ऑफ एज, वो ज्यादा है और 60 से ज्यादा लोग ज्यादा है वहां पे. So therefore we can see that today we have got a huge fertility rate and therefore the government should reap the benefits of this particular demography to make them skilled, to make them employable, who can indirectly contribute to the country's economy. So the challenge in the next 15 years for the Indian government is to raise the economic status of India
from being a low income country to at least a high middle income country. अगर ये गवर्नमेंट कर पाए एंड गवर्नमेंट अगर एक्सप्लॉइट करे पॉपुलेशन ग्रोथ टू इट्स बेस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एडवांटेज, then you can see that a large young population will make it more productive, effective, competent, and contribute to the national as well as economic growth. So धीरे धीरे वो सब करते हम लोग का क्या होगा, the quality of life will also increase. और एक बार quality of life अगर increase हो गया, then obviously there should be some of the good benefits that we will get out of this particular population. क्योंकि अगर हम लोग को क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर हम लोग को इंक्रीज करना है, देन ऑब्वियसली वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स द हेल्थ सेक्टर. और हेल्थ सेक्टर के लिए वी कैन सी दैट यू कैन सी अबाउट द रेस्पेक्टिव एरेना कि हम लोग कैसे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हेल्थ सेक्टर को कैसे दिखाएंगे, हेल्थ सेक्टर को कितना फ्रीबीज करना होगा क्या नहीं करना होगा, एवरीथिंग वी कुड हैव डायरेक्टली सीन. सो ये सब हम लोग को करना पड़ेगा. So in this all phenomena, we can see that such number of things are very much essential for us. Okay, so this is directly talking about the demographic dividend, about reaping the benefits of the demographic dividend. Okay, so this is all for today. Okay, we can hear such number of questions which is directly attempted to you. Okay, 5 number of questions यहाँ पे है. And this is the last question that you can directly keep it over here. Okay, so that is all for today. You will get your answers in the respective Telegram group. Okay, so thank you for today. Jai Hind.